Okay, so hello jam aspirants. I hope all of you are doing perfectly well. आज हम लोग थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा बहुत रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है. मोस्ट ऑफ द पीपल डू फेस दिस थिंग ऑन देयर मोस्टली जो भी तुम्हारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वहाँ पे मोस्टली आते हैं. जैम के सिलेबस में इतना नहीं है ये चीज़, बट हाँ सेंट्रल एग्जाम में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके एग्जाम्स में काफ़ी देखा जाता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आते हैं या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आते हैं. तो ये वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट है वो हम लोग थोड़ा सा आज के क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से. सो एवरी वन ऑफ यू just pay attention. If there is any doubt you can definitely ask me, but one more thing I must tell कि आप लोग सबसे पहले जो भी अच्छे क्लास में ज्वाइन करो मुझे एक बार बता दो कि if you all can see the screen properly, if you can see, if you can hear my voice properly. उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास. चलो, so let's start. Let's start. देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जो चीज समझना है, जस्ट बिकॉज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्टली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल जो एक टू एटम सिस्टम से बना होता है, सबसे इजीएस्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, उसके लिए हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करेंगे. सो लेट मी राइट इट डाउन. रिजिड, RIGID, रिजिड. Rotator. For a rigid rotator we know that यहां पे एक मास रहता है जिसका मास होता है m1. यहां पे एक मास होता है और दोनों के बीच में एक कनेक्ट होते हैं एक रॉड के थ्रू. So this is one mass, this is another mass, this one having some value say m1, this one having some value say m2. मान लो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है O पॉइंट पे, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है. तो सर जी सबसे आसान बातें जो हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास O इज योर r1. Distance of mass m2 from the center of mass O is your r2. ये सब चीजें अगर पता है तो सर जी दो साइड में मोमेंट आपका सेम होना चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास बैलेंस्ड है. तो m1 r1 should be equals to m2 r2. That's all. Again, this total distance is basically my r. So r, the distance between two molecules is r1 plus r2. This entire distance between the two molecules is I know r. So r can be taken as r1 plus r2 and m1 r1 should be equals to m2 r2. अब ये चीज यहाँ पे पता है तो भाई साहब जरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आप मुझे बता सकते हो कि r1 और r2 का वैल्यू क्या आएगा. r1 का वैल्यू आएगा m2 into r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और अगर मुझसे पूछोगे R2 का वैल्यू क्या है तो R2 हो जाएगा m1 into r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ये चीज होने के बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं इस मॉलिक्यूल का I. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको क्या लिख सकते हो m1 r1 स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है हम लोगों ने, प्लस m2 r2 स्क्वायर. जिसको अगर मैं टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करूं जहां पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे एक मॉलिक्यूल में कंसीडर कर रहा हूं जो एक डिस्टेंस r पे है और इस मॉलिक्यूल का मास होगा ऑफ कोर्स द रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस टू पार्टिकल mu is equals to m1 m2 divided by m1 plus m2. तुम लोगों को पता होना चाहिए टू बॉडी प्रॉब्लम को कैसे वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस किया जाता है. तो इस प्रॉब्लम में जो जो चीज होगा ये प्रॉब्लम में वही चीज होगा. सिर्फ यहाँ से यहाँ पे आने का सुविधा क्या मिला कि यहाँ पे सर टू बॉडी प्रॉब्लम था बट दिस इज अ वन बॉडी प्रॉब्लम. सो what are the advantages that you are getting from shifting from this problem to this problem? That here it was a two body system.
So things were a bit difficult taking R1 and R2, but now you have taken the two bodies, the one body. So the whole system is equivalent to this system where there is a particle of mass mu equals to m1 m2 divided by m1 plus m2 and the distance of r from the point 2. So this can be very well written as mu into r square. Mu into r square, where I know that mu equals to m1 m2 divided by m1 plus m2, where I must write down the value of mu. Mu equals to m1 m2 divided by m1 plus m2. That's my reduced mass. Okay. Now, if I talk about the energy of this rotator, then what would you say? Sir, the energy E of this rotator is basically half I into omega square. Which is the rotational kinetic energy, of course, can be very well written as half I into omega can be taken as L divided by I square, and this part would leave you with L square by 2i. So basically energy is the eigenvalue of the L square by 2i operator, which is L square का eigenvalue होता है तुम्हारा h cut square L into L plus 1, or okay fine, if I talk about this thing, it's like L square is basically the angular momentum of this particle, so I can just definitely take it as like I'm saying L, but whenever I'm writing the eigenvalue, I'm writing J. So so only the orbital angular momentum is actually considering, we are considering the orbital angular momentum here. So L square, that can be written as h cut square J into J plus 1. Fine. So you must write h cut square L into L plus 1, but yes, of course, the fact is we are only considering the orbital angular momentum. You can write L, but the usual practice is to write J. So that's why I'm writing J here. So the angular momentum L square divided by 2i can be written as h cut square L into L plus 1 divided by twice of I. Or maybe you can write J into J plus 1 divided by twice of I. J into J plus 1 divided by twice of I. By twice of I. That is actually equals to, h cut means h by 2 pi. H cut square means h square by 4 pi square. Right. So it is h square J into J plus 1 divided by 8 pi square into I. That's all I can say. This thing is there where your J, the quantum number for orbital angular momentum is 0, 1, 2, 3, dot, 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 dot. Done. Okay. Now there's a thing called term value, which is nothing but the wave number. We call wave number as term value. So TERM, term value, which is basically the wave number. That is f of j, usually written as 1 by lambda. That is actually equal to E divided by H into C. So E by H is equals to nu divided by C is basically 1 by lambda. So this thing would become equals to H square by 8 pi square IC, H divided by 8 pi square IC, this entire thing, then J into J plus 1. Now I'm writing this thing as B, so it will be B into J plus 1. Done. Everybody can see the whole calculation. B into J plus 1, where the constant B is known as the rotational constant, which is actually equal to h square by 8 pi square IC, where B is called the rotational constant. Now B is basically my, hang on, B is actually my rotational constant. Rotational constant can be written as h divided by 8 pi square IC. H divided by 8 pi square IC. That's your B. H divided by 8 pi square IC. That's your B. Fine. Now we're gonna see about the transitions.
between the rotational levels. So there must have some selection rule. ACLECTION, selection rule is very simple. So this is delta J equal to plus minus 1 is my selection rule. So whenever you're making the transitions, just make sure the delta J is your plus minus 1. Delta J is your plus minus 1. Now here I'm writing down how the transition is happening. Let a molecule absorbs energy and jumps from, let a molecule, I could have written it down here also. A molecule absorbs energy and absorbs energy and jumps from lower rotational state Ji, lower rotational state Ji to higher rotational state to Hi, GHL, higher rotational state JF. Then the wave number of absorbed radiation. Then the wave number of absorbed ABSOR VBED, absorbed radiation. Then the wave number of absorbed radiation is basically given by nu bar because of transition from Ji to JF. That is actually equal to your term value for JF minus term value. Term value is basically wave number to Ji. 1 by lambda is given by B into J final into J final plus 1. The value of term value, we all know B into J into J plus 1. So term value for the final J state is B into J final plus 1 minus term value for the initial state B into J initial plus 1. That can be written as 2B into J final. Okay, I know that J initial and J final, I must write J final is equals to J initial plus 1. I must write here J final equal to J initial plus 1, because I know that the transition will happen at a gap of 1 J value. So J initial is J initial, but J final is J initial plus 1, because the selection rule is always plus minus 1, so it is at a gap of 1 J value. So it will always be 2B into J final. It will always be 2B into J final. And J initial plus 1. So I can just definitely tell you that therefore nu bar, the wave number difference nu bar from J to J plus 1 is actually equal to 2B into, it is going from J to J plus 1, so final J value, that is 2B into J plus 1. You can just check this thing and you can say it for yourself. Just put JF equal to J plus 1 here, you will get to just put J plus 1 here. So Ji plus 1 into Ji plus 2, B will be taken common, minus, this is Ji into Ji plus 1. So Ji plus 1 will get common, Ji plus 2 minus Ji cancel out, so 2B into Ji plus 1. So Ji plus 1 was the final Ji value, so 2B into J final. Done.
2b into j panel. The 2b into j plus 1 is the answer. Of course, in centimeter inverse, because every unit we take here is in centimeter. So this thing is always in centimeter, they gave it. Now let me show you some transitions and their corresponding j values. So if you are having the transition from, this is your j initial, this is your j final, and of course here I'm writing down the value of new bar for j initial to j final transition. The values are kind of like this. First transition you are taking into consideration is 0 to 1, 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to 3, then 3 to 4, then 4 to 5, then 5 to 6, then 6 to 7, like this it goes on. I'm not writing any further. It's fine, you people have got it. The transition is happening from 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, like this is where the transition is happening. The J values are basically you're getting from here as 2B, 4B, 6B, 2B, 4B. So 2B multiplied to the highest J value, this is 6B, 2B into this 8B, 2B into this 10B, 12B, and of course 14B, like this way it goes on. What is the gap between any two frequency or wave number difference? What is the wave number difference between consecutive line? This difference is of 2B. 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 So the gap between the consecutive spectral lines is of 2B. If I had to show you the absorption spectra, the SOR, SOR PTION absorption spectra, how would you show this thing? Here is one line, here is another line, and here I'll get to see the lines. The first line I will get at 2B, second line I'll get at 4B, third line I'll get at 6B, then 10B, then 12B, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, all are equidistant. This is 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B. And the gap between the consecutive lines, everybody can see this gap is of 2B, 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 like this way you can see. And we can conclude a very simple and important term here. The absorption spectral lines are equidistant and wave number difference between the absorption spectral lines are equidistant and the wave number difference between the wave number difference between two consecutive spectral lines, two consecutive
spectral lines is to be the wave number difference between the consecutive spectral lines is that you can of course see for yourself. Of course, that you can see for yourself. Now there is some extra information. Take it as a note. There is some extra information. Take it as a note जो तुम्हारे problem solve के लिए बहुत जरूरी होगा. It's a note. Some extra information मैं क्यों दे रहा हूँ वो तुम्हें problem solve करने के वक्त पता चलेगा जब तुम problem solve करोगे, question answer solve करोगे. That is for HCl हाइड्रोजन क्लोराइड B का वैल्यू होता है तेरा 1034 सेंटीमीटर इनवर्स. 1034 सेंटीमीटर इनवर्स याद रखना. म्यू होता है तेरा 1.6 × 10⁻27 kg. म्यू मतलब रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. एंड और एक चीज थोड़ा सा बताना जरूरी है, that is delta E, change in energy for the transition J to J plus 1 is actually HC B into J into J plus 1. Sorry, 2B into J plus 1. वेव नंबर गैप को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी का गैप मिल जाएगा, क्योंकि वेव नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करने से एनर्जी मिलता है. That means 2B8C to J final into J final. That's the formula. अब इसके बाद एक चीज आता है जो है पॉपुलेशन के ऊपर. There is a question for population, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ. Upon population, you got some questions. So, population of the jth rotational level relative to the lowest j level. Population मतलब number of molecules in the jth level. Population of the jth rotational level relative to lowest level. Lowest level का मतलब है j equal to 0. क्या आता है वो? nj, number of molecules in the jth level by number of molecules in the 0th level, that is actually equal to 2j plus 1 exponential of negative of ej minus k0 by kVt. That is the formula you need to remember. जहाँ पे nj and n0 are the populations of jth and 0th level, where nj and n0 are populations of jth and 0th level respectively. And two j plus 1 and ना लिख के अगेन लिखता हूं, अगेन 2j plus 1 and 1
are the degeneracies of jth level and zeroth level. And zeroth level. Okay, now let me just tell you, let Jm be the rotational quantum number of the level. Let Jm, capital M, be the rotational quantum number of the level having maximum population. Having maximum population at temperature T. तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि Jm का वैल्यू क्या होगा? किस वैल्यू ऑफ J के लिए Nj मैक्सिमम होगा? Nj इज द पॉपुलेशन ऑफ द jth लेवल, तो किस वैल्यू ऑफ J के लिए Nj मैक्सिमम होगा? तो वो निकालना बहुत आसान है। dnj by dj at j equals to j maximum, 0 पुट कर दो, j इक्वल टू jm पे nj फिर मैक्सिमम होगा, तो यहां से सॉल्व करके हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, जिसको टोटल लिख सकते हो या ऐसे करके भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। जैसे भी लिखूं, मैं पहले और एक स्टेप और एक दिखा देता हूँ। ddj ऑफ the value of nj, write down n0 to j plus 1 exponential of n0 to j plus 1 exponential of, क्या है यहाँ पे, ej माइनस e0 बाई kbt। ej माइनस e0 क्या होता है? ej है तुम्हारा b into j plus b into j into j plus 1, e0 is 0, तो bhc j into j plus 1 by kbt। This thing into this. Yeah. That's the population. ठीक है, इसको तुम्हें 0 पुट करना है। इसको 0 पुट करोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा? jm, अच्छा ये एट j इक्वल्स टू jm लिख देना चाहिए, शुड बी 0, तो इसका सॉल्यूशन आएगा jm इक्वल टू jm इक्वल टू रूट ओवर ऑफ kbt बाई 2bhc। ये फॉर्मूला याद रखना, kbt बाई 2bhc माइनस हाफ। और एक चीज बता दूं कि एनर्जी फॉर द jth स्टेट इज ऑलवेज रिटन एज, तुम लोगों ने वेव नंबर क्या लिखा था? b इंटू j प्लस 1, तो वेव नंबर को h से मल्टीप्लाई कर दो, तो hc b into j plus 1, that is the energy for the jth state। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना था? ej माइनस e0, तो 0 स्टेट की एनर्जी क्या होगा? hc into b into 0 plus 1, तो ये तो 0 हो गया। एनर्जी ऑफ द 0 स्टेट इज 0, बट एनर्जी ऑफ द j स्टेट इज hc into b into j plus 1, तो यही रहेगा। ठीक है, डन। अब इसके बाद तुम्हारा और एक चीज आता है कि इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लो तुमने कुछ आइसोटोप्स को इधर उधर मिला दिया है, तो उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या फर्क आएगा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि
It's a very important stuff. We call it effect of isotopic substitution. क्या होता है ये चीज भाई? सर जी कुछ नहीं है, मान लो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेव नंबर उतना गुना ही बढ़ेगा, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, उतना गुना ही बढ़ेगा, ये 3 टाइम्स बढ़ा तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ेगा, b इज द रोटेशनल कांस्टेंट। नाउ यू नो दैट b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by mu, क्योंकि b इज इक्वल्स टू क्या लिखवाया था मैंने, h डिवाइडेड बाय 8 pi स्क्वायर ic, I मतलब mu r स्क्वायर इनटू c, तो b इज डायरेक्टली टू 1 by mu। तो ये चीज हो गया, तो b रोटेशनल कांस्टेंट फॉर द आइसोटोप बाय रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू mu for the actual molecule divided by mu for the isotope. Rotational constant for the isotope, rotational mu for the actual molecule, and mu for the isotope. That's all. अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल दिखाऊं तो जरा देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस तो खुद से खुद कर लेंगे। जैसे कि मान लो बोल दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड 12C16O, इसके लिए तेरा जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांजिशन का वो न्यू 1 है, वो सेम ट्रांजिशन के लिए दूसरा इसका एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर कार्बन का पता नहीं है बट ऑक्सीजन का पता है, वो है 16, फ्रीक्वेंसी आया है न्यू 2, तुम्हें बस पता करना है x का वैल्यू क्या है। सर जी हमें पता है, अभी भी अपने पढ़ाया कि न्यू आपके रिड्यूस्ड मास के साथ 1 by mu में प्रोपोर्शनल है, मतलब न्यू 1 by न्यू 2 should be mu 2 by mu 1. So what is reduced mass of the second molecule? 16 into x divided by 16 plus x. अच्छा, what is the reduced mass of the first molecule? 12 into 16 by 12 plus 16. Good. तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ से इसका सॉल्व करके तुम न्यू1 न्यू2 पता है तो यहाँ से इस फॉर्मूला को सॉल्व करके x निकाल नहीं सकते, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद और एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड नॉन रिजिड रोटेटर। कुछ रिजिड रोटेटर होता है जो नॉन रिजिड होते हैं, मतलब बेसिकली कुछ रोटेटर होता है जो नॉन रिजिड होता है, मतलब उन मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है दैट माइट वेरी, तो उनके लिए जो टर्म वैल्यू होता है वो है नॉन रिजिड रोटेटर। तो उनके लिए जो टर्म वैल्यू होते हैं, हमें टर्म वैल्यू से मतलब है एफ ऑफ जे दैट इज इक्वल टू, जैसे कि रिजिड रोटेटर के लिए होता था बी इंटू जे इंटू जे प्लस वन, इसके लिए होता है बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे इंटू जे प्लस वन का स्क्वायर। डन। अच्छा, एनर्जी फॉर द जेथ स्टेट क्या होगा? सर टर्म वैल्यू मिल गया, मतलब वेव नंबर मिल गया, वेव नंबर के साथ 8 से मल्टीप्लाई कर लो काम बन जाता है, तो 8c इंटू एफ ऑफ जे, ठीक है, एफ इज द टर्म वैल्यू। सिलेक्शन रूल क्या है सर जी? सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशन का तुम्हारा डेल्टा जे प्लस माइनस 1 हर जगह सेम। तो सर बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारा जे इनिशियल इक्वल टू जे रहा, जे फाइनल हमारा जे प्लस 1 रहा, तो न्यू बार
for J2 J+1 के लिए आ जाएगा f of J+1 माइनस f of J। इस फॉर्मूले में पुट करो तो f of J+1 देखो तो 2 आ जाएगा तुम्हारा 2b J+1 माइनस 4d J+1 क्यूब। वैल्यू पुट करके देखना 4d J+1 क्यूब and that actually equals to 2b into J final minus 4d J final cube। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा नोटेशन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये और बेहतर लगता अगर मैं Ji को लिखता J और Jf को लिखता J+1। तो यहाँ पे और सही लगता Ji to Jf मतलब J final minus J initial, तो so this thing तो या तो 2b into J final। ठीक है, यहाँ पे और एक लाइन ऐड करके this thing is actually being equals to 2b into J+1, that is 2b into J final because J final is your J+1। J initial is your J, J final is your J+1। Done। यहाँ पे हम लोगों ने वैसे ही किया है, जब नॉन रिजिड रोटेटर पढ़ाया है तो हम लोगों ने लिया J इनिशियल इक्वल्स टू J फाइनल ट्रांजिशन हो रहा है J फाइनल में, दैट इज योर J+1, तो न्यू ऑफ J to J+1 is this f of J+1 minus f of J, that is equal to this thing 2b into J+1 minus 4d J+1 cube, that is 2b into J final minus 4d J final cube। Now frequency of corresponding transition will decrease with respect to rigid rotator। तो frequency of course rigid rotator के respect में decrease कर जाएगा। Therefore rigid rotator के लिए जो frequency मिल रहा था और non rigid rotator के लिए उस transition के लिए corresponding frequency कम होता जाएगा। rigid rotator के लिए जो frequency मान लो 1 to 2 में जो frequency मिला था, non rigid के लिए 1 to 2 में वही frequency कम मिलेगा। That's what I'm saying। उसका value decrease हो जाएगा frequency, क्योंकि एनर्जी टर्म वैल्यू डिक्रीज हो गया है, मतलब हर एक स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन विल डिक्रीज of corresponding transition will decrease with respect to rigid rotator। खुश हो? चलो हम लोग निकालते हैं टर्न वैल्यू फॉर हर एक J। तो AF फॉर J इक्वल टू 0 क्या आता है? AF 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 वन टू थ्री फोर। F for J equal to 0 क्या आता है? 1 क्या आता है? 2 क्या आता है? 3 क्या आता है? 4 क्या आता है? F for J equal to 0 is something 0, J equal to 1 is 2b minus 4d, J equal to 2 is 6b minus 36d, for J equal to 3, 12b minus 144d, for 4, 20b minus 400d,
F for j equals to 5. 2, 6, 12, 20, 2, 6, 12, 20, 4, 36, 144, 400, 30 minus 900D. Done. And of course, the formula you should all know. The formula for f of j, b into j into j plus 1 minus d into j into j plus 1 का square. So b into 5 into 6, f of j, you all know. तो देख j 0 पुट करेगा तो दोनों 0 हो जाएंगे, 1 पुट करोगे तो दिस इज 2b माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4d, 3 पुट करोगे तो 3 into 12b minus 12 square 144d, like this will go. Done. So this thing is done, so we can just talk about the transition and their corresponding frequencies. So frequency for the transition 0 to 1. Well, I can just write it down like this way. J initial, J final, frequency for J initial to J final transition. The way I have written it down here. कहाँ गया? So J initial, J final, new word for J initial to J final. So it will be 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. All these transitions are happening. Transition from 1 to 2, 2 to 3 to 1 to 2, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, like this where the transitions are happening. But if I say this, it will be 2b minus 4d. For this it is 4b, 6b, 8b, 10b. 4, 6, 8, 10. 32, 108. 256, 500. Just have a look. When the transition is from 1 to 2, you just do f of j equals to 2 minus f of j equals to 1. You get 4b minus 32d. When you're having transition from 2 to 3, so you just minus f j equal to 3 minus f j equal to 2. So you'll get 6b minus 108. That's what you do. So the gap between these two levels is the frequency this. The gap between these two levels is the frequency this. The gap between these two levels is the frequency this. So all these things you can see it from here. $32, 108, 256, 500, 4. Done. Now there is a certain rule for the relation between B and D, and then the chapter is over. On the next class we will solve questions. Let me tell you the relation between B and D.
relation between B and D. So I know that D is actually equal to 4D cube by vibrational wave number vibrational, that thing, wave number corresponding to vibrational frequency, जहाँ पे nu bar vibrational is wave number corresponding to vibrational frequency. Corresponding to vibrational frequency. Vibrational frequency. Okay, that can be written as. तो basically frequency of vibration क्या होता है? 1/2 pi root over of k by mu. So this thing will be nu vibrational frequency by c is the wave number, that is k is the force constant and mu is the reduced mass. So k is 4 pi square c square nu vibrational square, the force constant. Done. So from here you can find out the value of D as h cube by 32 pi to the power of 4 I square r square kc. That is all. So I will end the lecture here today. Thank you very much. जो भी बच्चों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, they can definitely follow my टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा इस क्लास का पीडीएफ, लेक्चर का पीडीएफ. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशनल ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके जितने भी सारे पीवाईक्यूज हैं फ्रॉम different various examinations of Central University or maybe for some entrance examination we will solve. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.